Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथिरे मु ऑलरेडी प्लस टू सेकेंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारी एवं मु प्लस थ्री CBCS फिजिक्स ऑनर्स जीई आ MSc फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोस अपलोड करुच्ची जदि भल लगिला ताले वीडियोस को लाइक करदेव और चैनल को सब्सक्राइब करदेव यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो इट्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पाई बेल आइकन को एटी ऑल रे सेट करदेव तापर वीडियोज रो क्लैरिटी बढ़ाई गो टू सेटिंग्स क्वालिटी एडवांस उपरे क्लिक करी यू कैन इंक्रीज द रिजोल्यूशन सबू वीडियोज पाई पीडीएफ नोट्स मु पठेबी जोटा एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्लिक करी यू कैन गेट द लिंक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स तापरे मोर चैनल नेम को क्लिक कले सबू वीडियोज को मु यूनिट वाइज एच पार सिलेबस सजाई की रखिथिबी व्हिच यू कैन गेट फ्रॉम द प्लेलिस्ट एठी सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज टॉपिक रे हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ ए वेक्टर ए विषय रे पढ़िबा जोटा कि रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम रो अंडर रे आछी so for this purpose we will consider a reference frame which is x y z as you can see in the figure this is our reference frame x y z which is fixed in the space माने एटा होची space set of axis तापरे आ गुटे reference frame which is x dash y dash z dash as shown by the dotted line right ताले एटा हे गला body set of axis बा एटा होची rotating frame okay suppose at time t equal to 0 माने initially their origins and base vectors coincide माने origin टा o रे तो already अछि ता सहित space आउ body set of axis सबु coincide करथुला initially now when the body starts rotating then the frame that is the body set of axis that is o x dash y dash z dash it will rotate with respect to the space set of axis that is o x y z okay so rotate he ki yara position change hela now we shall establish a relation between the acceleration of the body motion in the two coordinate systems okay acha now एथि पई हमें कोन करिबा हमें गोटे पॉइंट नेबा ओके गोटे पॉइंट p having coordinates x y z okay so एटा आसिला सपोज अनप्राइम्ड बा स्पेस सेट ऑफ एक्सिस रे बा याकू कहिबा हमें स्टेशनरी कोऑर्डिनेट सिस्टम व्हिच इज डिस्क्राइब्ड बाय द पोजीशन वेक्टर स्मॉल r ओके सो एठी पॉइंट p माने ए पॉइंटटा राइट दिस इज आवर पॉइंट p ओके ताले यार पोजीशन वेक्टर बा रेडियस वेक्टर हेगला स्मॉल r नाउ the motion of this point p will be now described by vector r which is a function of time t initially जेमती कहली at time t equal to 0 हमें ए रेडियस वेक्टर को सिंपली लिखि देला x I cap plus y j cap plus z k cap स्पेस सेट ऑफ एक्सिस रे सिमिलरली बॉडी सेट ऑफ एक्सिस रे x dash I dash plus y dash j dash plus z dash k dash हबो now since body set of axis बा o x dash y dash z dash system it is rotating so unit vector जो अछि I dash j dash k dash will also change their direction as the time advances okay so with the respect of time यार डायरेक्शन मध्य चेंज हेबा whereas यूनिट वेक्टर जोटा स्टार्टिंग रे थिला स्पेस सेट ऑफ एक्सिस रो जोटी एठी होची I j k they will remain constant okay so as the point p moves जते बेले ए पॉइंट p टा मूव करिवो then the velocity of this point p is now different in the two systems ओके जेमती तुम पढ़ुल स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी रे दुईटा फ्रेम थिला गोटे थिला रेस्ट फ्रेम गोटे थिला मूविंग फ्रेम ओके किंतु एटा होची रोटेटरी मोशन सेटा थिला लीनियर मोशन ओके सो हियर द वेलोसिटी ऑफ the point p is different in the two coordinate system but two systems for region of their relative motion okay so we know that when a vector changes then आमे याकू लेखि परिबा जोटा कि एठी फिगर रे बुझेई छी देखो वेक्टर रो चेंज जोटा कि हमरो टॉपिक रो हेडिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ ए वेक्टर सो एटा आछि हमरो वेक्टर r ओके एटा एंगल क्रिएट करछि देखो थीटा नॉर्मल सहित राइट ए हिसाब रे एटा रोटेट करूछि ओके आमे गोटे स्मॉल एंगल नेबा रोटेशन रो ओके स्मॉल इंक्रीमेंट करबा सपोज एटा d थीटा याकू कहला such that r वैल्यू चेंज हे कि एटा आसिला r plus dr okay
तापरे एठी ऊपरे आछी एंगल हमरो डी ओम ओके आउ ए एंगलटा हेगला सॉरी ए बाहुटा हेगला डी आर देन दिस वन विल बी आर sin थीटा ओके याकू फिगर आमे बुझिला द रोटेशन ऑफ ए वेक्टर ताले डी आर को आमे लिखि परिबा एज r sin theta d ohm or याकू in terms of vector लिखि परिबा as the cross product of d ohm and r ताले dr by dt माने with respect to time जदि हमें याकू differentiate करूछु then we are getting d ohm by dt cross r okay which is omega cross r omega हेगला एठी angular velocity ताले हमें लिखि परिबा d I dash by dt to be equal to omega cross I dash okay omega jemti कहली angular velocity of rotation therefore the rate of change of vector small r जोटा हमरो point p रो location थिला when the primed system is rotating with angular velocity omega with respect to the unprimed system then it is given by dr by dt equal to this much okay याकू जदि हमें further solve करिकी जिबा ताले we will get the main relation this one dr by dt unprimed equal to dr by dt primed माने एटा होची स्पेस रो एटा होची बॉडी रो प्लस ओमेगा क्रॉस r ओके सो ए इक्वेशन को हमें ऑपरेटर हिसाब रे भी लिखि परिबा सेम इक्वेशन को ऑपरेटर माने एठी हमें r को हटे दबा ताले देखो d by dt becomes equal to d dash by dt plus omega cross हला एटा होची ऑपरेटर इक्वेशन एठी d dash by dt होची it is interpreted to be the mean time derivative of the radius vector r in the rotating coordinate system that is the body set of axis okay एबे आकु बढ़िबा हमें देखिबा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए रिजिड बॉडी हमें केमती आकु बाहर करिबा ओके सो एटा भी सही रेट ऑफ चेंज ऑफ वेक्टर को यूटिलाइज करके हमें बाहर करिबा देखो डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ ए रिजिड बॉडी एटा हमें जानछु इट रिमेन्स फिक्स्ड this means that the position vector of any point p relative to the origin o of the body set of axis will be constant in magnitude okay तार magnitude टा constant होइबो and therefore it changes only in direction okay when the body is in motion a motion कहले हमें rotatory motion को बा rotation को बुझिबा okay ताले relation जदि एबे हमें बाहर करिबा velocity रो angular velocity सहित for this the relative velocity of the point p at the position suppose of ith particle याकू हमें एक्सप्रेस करिबा in terms of angular velocity ताले vi ही गला ith particle पई omega cross ri जोटा कि ऊपर रिलेशन हमें पाइथिला and here we recall our discussion जोटा कि rate of change of vector हमें ऊपर पढिला already okay ताले एठी सपोज हमें कोन करिबा गोटे constant vector जदि कहबा rate of change of a constant vector was absolutely expressed in terms of angular velocity vector and it was applicable to any general vector that is g for general हमें कहबा then here the body set of axis जोटा कि primed coordinate system थिला it will undergo rotation with respect to the space set of axis and any change in the components of g with respect to the body set of axis will differ from the corresponding change with respect to the space set of axis only by the effects of rotation of the body axis ताले simple expression जदि हमें कहबा जोटा कि हमें operator equation पाउतला सेही बळे हमें उडे general vector को लिखि परिबा dg by dt in the space to be equal to dg by dt in the body plus omega cross g okay now we can find out the axis about which the body and therefore the body set of axis through origin rotate okay so the procedure is now to calculate the components of angular velocity vector with respect to the either system of axis so हमको एबे टाइम डेरिवेटिव बाहर करबा को पड़िबो रेस्पेक्टिव यूलर्स एंगल्स रो ओके जोटा कि फाई डॉट थीटा डॉट साई डॉट ओके so এটা আসলে angular speeds about the space z axis line of nodes
एंड बॉडी जेड एक्सिस जो जो हिसाब रे हमर रोटेशन आमे परफॉर्म करथिला यूलर्स एंगल पाई से हिसाब रे देखो ए तीनटा स्पेस सेट ऑफ एक्सिस line of nodes and body z axis or z dash axis. Okay, and we shall denote them to be equal to omega phi, omega theta and omega psi respectively. First ame bahar kariba components of angular velocity vector along the body set of axis. Okay, so in consequence of the vector property of omega, that is the angular velocity, we can combine these components vectorically to form omega, and we shall obtain the components of omega along the body set of axis. Okay, so omega phi जोटा अछि हमें देखिला it is along the space z axis, therefore its components along the body set of axis हमें पाई परिबा by applying the complete orthogonal transformation, that is a equal to b c d जोटा हमें देखुतिला. Okay, so ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन रो रिलेशन जदि आमे पकेइबा ताले याको ए हिसाब रे लिखि परिबा ओमेगा फाई एक्स डैश प्लस ओमेगा फाई वाई डैश ओमेगा फाई जेड डैश ए मैट्रिक्स टा हेगला इक्वल टू ए देन 0 0 फाई डॉट. ओके, ओनली फाई डॉट पे एटा एग्जीक्यूशन होची ताले ए रो वैल्यू जोटा आमे पाइथिला. ओके, एटा देखिबो ए रो वैल्यू टाको पुट करबो जोटा प्रीवियस क्लास रे आमे बाहर करथिला ताको पुट करला परे and solving further we are getting the respective omega phi x dash y dash and z dash values like this. Okay, acha ye gola omega phi. Now come to omega theta which lies along the line of nodes and for which we will perform the orthogonal transformation only b. Okay, in order to come to the body axis after rotation through an angle theta. Okay, so omega theta along x dash y dash z dash axis are obtained upon applying the final transformation. से बढ़िया transformation equation लगेला हमें देखो ये बढ़िया देखो omega theta x dash y dash z dash equal to b theta dot 0 0. Okay, again we apply the value of or put the value of b and thereafter we solve it. हमें respectively तीनटा value पाइगला omega theta x dash y dash और z dash रो. Okay, and finally omega psi रो component बाहर करिबा. Okay, which is already parallel to the body z dash axis. Okay, so एथिपाई आ किछि भी transformation हमें नेबा नहीं. Okay, its only component is z dash component which is equal to psi dot. ताले याको simply हमें लिखिबा 0 0 psi dot किछि भी आ multiplication हैला नहीं because किछि भी transformation होउनी. ताले simply हमें components पाइगला omega psi x dash y dash z dash as 0 0 psi dot. Okay, so हमें angular velocity रो सबु components बाहर कर देला. Okay, ताको एबे तीनटा इक्वेशन रे देखो एठी लिखि देला. Now adding the components. Okay, हमें एबे add करिबा in order to find the total angular velocity. Okay, so adding the components of the three angular velocities along the individual axis, we have the components of omega which is equal to omega phi plus omega theta plus omega psi with respect to the body axis. ताले omega x dash equal to देखो याको add कला जेते सब x dash रो component. Okay, we put the value, we get the result. Similarly omega y dash again we put and this is the final result. And finally omega z dash which is phi dot cos theta plus psi dot. ओके केतरा बही रे यार ए जो एक्सप्रेशन को डायरेक्ट भी लिखा था. ओके केमती डेरिवेशन यार होउची सेटा हमें देखला ए ऊपर. ओके, सो ये हमें देखला एंगुलर वेलोसिटी along the body set of axis. Now we see the components of angular velocity along the space set of axis. So एटा भी किछि नहीं सिमिलर एनालॉगस वे रे हमें याको बाहर करि परिबा. We can obtain the components of angular velocity omega along the space set of axis, and for this in going from body to space set of axis eta hi amar kamo all the three rotational operations are to be performed in the reverse order. Mane psi ku backward kariba, theta ku backward and then phi backward. Therefore the components of psi dot which is along z dash axis, that is the body z axis, will be obtained by multiplying it with a inverse or a tilde. ओके, देयरफॉर हमें या को लिखिबा से हिसाब रे देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ए हिसाब रे
Okay, omega psi x y z equal to a tilde by a inverse भी लिखी पारो 0 0 psi dot. Okay, we put the value of a inverse and this is our result. तापर similarly phi dot will be along the line of nodes and a rotation phi about z dash axis in the reverse order would bring out the x dash y dash z dash set to x y z মানে body to space. Therefore transformation matrix এটি লাগিব d inverse বা d tilde because d is an orthogonal matrix. Okay, so ଆମେ ଲଗେଇଲା ୟାକୁ omega theta x y z equal to d inverse theta dot 0 0. Okay, d inverse ର value put କଲା we are getting this result and finally phi dot. Okay, ଏଠି ଟିକେ I think printing mistake ଲାଗୁଛି ଏଠି phi dot ହବ. Phi dot itself lies along the space z axis, so କିଛି ବି transformation ୟା ପାଇଁ ଦରକାର ହେବ ନାହିଁ. We simply write it as omega phi x y z equal to 0 0 phi dot. Okay, so this is our result. ତାହେଲେ ଏବେ ଏଇ ତିନିଟା ଯାକ ସେଟ୍କୁ ଆମେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ combine କରିକି respective components of angular velocity paigala along the space set of axis. Okay, henceforth we shall omit the prime sign to denote the body set of axis, and since the body set of axis will be used exclusively, however this sign may indicate a different set of axis within the body itself. So this is all about the rate of change of vector, and along with that we have read about the angular velocity components. Okay. Thank you.